अरे तेरा भला हो, सबसे पहले मैं ही खाऊं। वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम लोग जो सीखने वाले हैं इसके अंदर लास्ट में हमने देखा था कि कैसे एग्जाम सर्वर इंस्टॉल किया जाता है और उसके ऊपर पीएचपी के प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट करते हैं हम लोग। देन आज हम सीखने वाले हैं कि प्रोग्राम्स लिखे कहाँ पे जाते हैं। नॉर्मली नोटपैड पे प्रोग्राम्स लिखे जाते हैं, या आपने नाम सुना होगा नोटपैड प्लस प्लस। यूज किया है किसी ने? अगर यूज किया है तो उसको देख लेते हैं कि कैसे कैसे वो काम करता है, उसमें क्या उसके बेनिफिट्स होते हैं। ठीक है, हम सिंपल नोटपैड पे भी कर सकते हैं सारा का सारा काम, लेकिन हम यूज करेंगे नोटपैड प्लस प्लस। ठीक है, तो उसके लिए देख लेते हैं, कुछ बच्चे ऐड हो रहे हैं, उनको भी ऐड होने दीजिए। सो स्टार्ट करते हैं कि नोटपैड प्लस प्लस को किस तरह से यूज कर रहे हैं। जिसको आता है अच्छी बात है, अदरवाइज बाकी सब देख लीजिए इसको। PHP program tutorial for beginners, and in this video I'm going to show you how to install XAMPP web server to test your PHP programs. So XAMPP is PHP programming for beginners, and in this video I'm going to show you how to install Notepad++ for writing and editing your PHP programs on your Windows operating system. So Notepad++ is a simple text editor, but it's good in a way that it highlights your text. Okay, so whenever you are writing PHP or C++ or any other program using Notepad++, it will highlight your text and
or on your Linux operating system. There's one more IDE called NetBeans, which you can use to write your code on Linux or Windows and macOS. You can program PHP using that NetBeans or HTML IDE also. But for now, we are going to discuss for our tutorial series. I've started the installer, and by default, I will select English as my language. I will say OK. Next, I agree. This is the default location where it will be installed. Next, next. And if you want to create a shortcut, you can just take this option or otherwise uncheck it if you don't want a shortcut on the desktop and install. And it will take few seconds to install this notepad because it's a very lightweight installation, but it's really powerful. And just leave this checkbox checked, so Notepad++ will be launched immediately whenever you want to, whenever you close it. So in here we can write our code, and why I'm stressing on Notepad++ is because, for example, I have Notepad also, Notepad in my Windows operating system, and it will also work fine, but there's one major difference in here in Notepad++ programming or using Notepad++ editor and this only Notepad editor, which is whenever you write your code in your Notepad++, you will be able to see the syntax highlighted. So I have written some code. First of all, I need to save this file as a PHP file. So I will right click it and I will say save as, and I will make one folder in here, which I will call it as tutorial. And in this tutorial, I'm going to give the name of this PHP file, which is, for example, test.php, and click save. And now you can see the syntax highlighted. It's red. And for example, I want to echo something. Don't worry about this code. We are going to see in detail how to use this code, so don't worry about this. I just want to show this syntax highlighted for now. So in here you can just print hello world. Okay, so you see this starting tag and ending tag start with red color markings. This echo is blue color. This hello world has other color, and this semicolon has other color. And whenever you want to write the same code using Notepad++, and want to save it as, for example, somewhere in the same place where I have given this test2.php, and when I save this, it will not highlight your syntax. Okay? So it's just a plain editor, but you can use this plain editor. There is no constraint that you have to use Notepad++. You can use it, but the only problem is the syntax highlighting. This makes your code really easy to read and maintain, and this you will always see it as a black script of code. So you
तो अभी हमने सीखा था यहाँ पे क्या इंस्टॉल करना, नोटपैड प्लस प्लस। ये सारा काम नोटपैड से भी कर सकते थे हम लोग, लेकिन प्लस प्लस से क्यों कर रहे हैं? उसमें कलर्स दिखा रहा है, हाइलाइट्स कर रहा है उसको, कहाँ से टैब स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे एंड हो रहा है। जैसे आप लोग नेस्टेड इफ और स्विच केस देखा था हम लोगों ने। नेस्टेड इफ के अंदर हम लोग क्या करते थे, बहुत सारी कंडीशंस हो जाती थी, तो उसको अलग अलग टैब स्पेस से उसको आइडेंटिफाई करते थे, कौन सा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कौन सा कहाँ पे एंड हो रहा है। उसको समझने के लिए जैसे ये हमारा नोटपैड प्लस प्लस होता है, ये उसका टैब दिखाएगा कहाँ से कहाँ पर स्टार्ट हो रहा है, कहाँ से कहाँ को एंड हो रहा है। ठीक है, देन इसलिए हम लोग नोटपैड प्लस प्लस यूज करने वाले हैं। आप लोग नोटपैड से भी चाहे तो उससे भी हो जाएगा, कोई वैसा ही नहीं है, हमें प्रोग्रामिंग आनी चाहिए। देन उसके बाद आप लोगों को किस तरह से प्रोग्राम लिखना है, कैसे कैसे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है। लास्ट टाइम हम लोगों ने XAMPP सर्वर इंस्टॉल किया था, उसको स्टार्ट किया था। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम आएगी, देन उसकी जो पोर्ट वैल्यूज होती है, PID वाली पोर्ट वैल्यूज, उसको चेंज कर सकते हैं अगर यूज में आ रही है किसी इंपॉर्टेंट फंक्शन के। अदरवाइज उसको इंस्टॉल करेंगे, नोटपैड प्लस प्लस इंस्टॉल करेंगे, देन हम लोग PHP का फर्स्ट प्रोग्राम लिखेंगे। ठीक है, तो आज देख लेते हैं उसको प्रैक्टिकल्स। बच्चे मैं आप लोगों को उससे पहले बता दूं कि आप लोग जो नोट्स लिखेंगे, जो मैंने PHP के आप लोगों को एक नोट्स शेयर किया हुआ है, उसको आप लोगों को नोटबुक में कॉपी करके लाना है, दिखाना है मुझे। ठीक है, और ऐसे ही प्रोग्राम्स। तो पहला वाला जो प्रोग्राम था दैट वाज हाउ टू इंस्टॉल XAMPP वेब सर्वर। ठीक है, प्रोग्राम नंबर 1 ये है, आप लोगों को फाइल में लिखना है। सेकंड है नोटपैड प्लस प्लस को कैसे इंस्टॉल करना है, इसको भी यूज करेंगे हम। ऐसे प्रोग्राम ही लिख पा रहा हूं इसको मैं। बेसिकली दोनों थ्योरेटिकल स्टेप्स हैं, तो आप लोगों ने जैसे पहले कुछ लिखे होंगे फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, ठीक है, वैसे ही आप लोगों को यहाँ पे भी लिखना है किस तरह से आप लोगों को इसको इंस्टॉल करना है। देन जो हमारा थर्ड प्रोग्राम होगा, राइट अ प्रोग्राम यूजिंग PHP टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड, या हेलो वाला जो प्रोग्राम होता है उसको लिखना है आप लोग को। ठीक है, देन वो थर्ड प्रोग्राम होगा। तो बेसिकली आज वो वाला प्रोग्राम भी हम कर लेंगे अभी थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले आप लोग को नोट्स जो है एक बार देख लीजिए, मैं स्क्रीन पे दिखा देता हूँ कि मैंने नोट्स आप लोगों को शेयर किए थे, जो स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, सारे बच्चों के पास है ये ज़्यादातर। देन इसके अंदर जैसे PHP की डेफिनेशंस वगैरह मैंने बताई थी, कब डेवलप किया है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ना। देन उसके बाद जो सिंपल जो फॉर्मेट होता है उसका, देन एप्लीकेशंस हैं, प्रीरिक्विजिट्स हैं इसकी, क्या क्या पहले क्या क्या तैयारियां करनी होती हैं हमें, कॉमन यूजेस हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हेलो वर्ल्ड स्क्रिप्ट किस तरह से हेलो वर्ल्ड वाला प्रोग्राम होता है। ठीक है, ये सारी चीजें आप लोगों को जो थ्योरेटिकल नोट्स हैं उसमें लिखना है। ठीक है, ये PHP पार्ट्स इंस्टॉलर है जो अभी हम लोग ये सब कर रहे थे अपना। इस सब पार्ट्स को आप अगर जो ये प्रोग्रामिंग वाला पार्ट है, इसको अगर आप नहीं भी लिखना चाहें तो इसमें तो भी चल जाएगा, क्योंकि आप उसमें लिखेंगे फाइल के अंदर, लेकिन जो थियोरेटिकल पार्ट है वो आप लोगों को उसके अंदर जरूर लिखना है। देन नेक्स्ट है हमारा हेलो वर्ल्ड वाला, सीख लेते हैं। उसके बाद ये कमेंट कैसे लिखी जाती हैं या और चीजें कैसे कैसे होती हैं वो सब करना होगा। तो बेसिकली जो स्टार्टिंग में मैंने बताया है वो नोट्स रेडी कर लीजिए आप लोग, चाहे ऑनलाइन क्लास ले रहे हो या ऑफलाइन ले रहे हो, नोट्स आपके रेडी होने चाहिए। ठीक है, जब भी आप ऑफलाइन कॉलेज में आएंगे तो आप लोगों को नोट्स दिखाने होंगे। ठीक है, एक और मैं अभी कुछ शो कर रहा हूँ कि जो फर्स्ट प्रोग्राम होता है ना, देन उसके बाद आप लोग खुद से उसको करेंगे। So guys, welcome to the fourth video. Code in PHP. So first of all, we will start our Apache server. So go to your start menu and in here search for XAMPP, which we have installed, and open XAMPP control panel from here. Open this XAMPP control panel, and when this control panel starts, we need to start the Apache server, right?
example, and I will save it. And now we can start our program. By the meantime, this XAMPP server has already started, and in here, when we start this server, it will still give you this error because in the config file you need to make a change. I've already told you that when you go to this config here, it's 8080, right? So whenever you need to start this server will be started on the port 8080 and not on the port 80, right? And then for now, you will need to start with MySQL server. We are not going to use this MySQL database for now, but start your Apache server, right? Now, let's see what and how we can write our first hello program. So, every PHP program starts with this script with these tags. So you start with this tag, this smaller than symbol, then question mark, and then PHP, and then it will end with this greater than symbol. Okay, and whatever code you will write in between here, I forgot to give this question mark here. So the starting tag is like this. Every code which you write in PHP will be written in between these two tags. So this tag is the starting tag. I will make it a little bigger so you can see. And so every PHP code will start from the tags like this and end with the tag like this. Okay. So we will see in some slides what does the PHP code look like. Structurally similar to C and C++. Okay. So our PHP code will be structurally similar to PHP, C++ and C in a way that it can support procedural language like C, and it can be used as an object-oriented programming also to some degree, which C++ is, right? And this object-oriented part, we are going to see it later, but for now, we are going to see the procedural part. Okay? And all PHP statement ended with a semicolon, right? And each PHP script must be enclosed in the reserved PHP tag like this and like this. Okay? So I've already shown you this. So I will go to our code here and I will write something to echo. So this echo function, we use it for printing something on the browser, for example. And after this echo function, whatever comes in the double quotes will be printed on the browser. So for example, hello world. And remember, every PHP statement ends with semicolon. So don't forget to add the semicolon at the end of your every line of the code, right? I will save this program and I will open my browser and I will write here localhost, and my port is 8080. So localhost : 8080, right? If you are running on port 80 here, not 8080 but only 80, you don't need to give this port number. Port 80 is by default a localhost port, right? If you are running on port other than 80, for example, in my case, I'm running on 8080 to give localhost : 8080 and the location of the PHP file you are in. So if you remember, we have created this YouTube folder, and inside this we have this test.php. Okay. So in our browser, we will write YouTube. This is the folder, and then you need to give the path of your text file, right? So just give slash
you run this or press enter, you will be able to see this hello world here. Okay, so this is the basic code to print hello world, right? And every code which you write in the PHP, don't forget to end this code with this semicolon, and always start this your PHP code with this starting tag like this and end with ending tag like this. Now to comment, give some comment. For example, you can see in the slide. So to give the comments, PHP support C++ or Java style comments like this slash, double slash here. It also supports shell style comment like this hash, and it also supports C style comments like this. So we will see it all the comments. For example, it supports this double slash, and whatever you can write here, it will be not executed by your compiler, right? For example, I can write here, this is hello world code, for example. Okay, and whatever code you will write in this double slash, or for example, I can write the same thing using my hash symbol. Okay, and I can write the same thing using this C style comments like this slash asterisk asterisk slash, and whatever you write in between this will be considered as a comment. So you can provide comments in three ways: in C++ style like double slash, in shell style using this shell or this hash, or like C style using this slash asterisk and asterisk slash. And this all code which you write in the comment section will not be executed. So I will save this file, and once again when I refresh this code will not be executed. This is just for your reference. Okay. Now, for example, if you can also say I want to print this hello world in two different lines. So I can just write hello here and word here, and let's see what is the response. Response will always be the same, okay? Because your line is ending here, right? And it is indicated by the semicolon. So this code and this code will be considered as one line of code, okay? And PHP also supported HTML tag. So if you don't know how to use HTML, I have a playlist in my channel. You can search for this HTML tutorials, or otherwise you would even to follow code if you don't want to. It's really easy to understand HTML tag. So for example, I want to break this hello word, and I want to print hello in one line and word in other line. I can use HTML tags like these, and I can give this break tag, break the line. For example, I want to print this word in capital letters or bold letters, so I can just give this bold tag here and this tag like this. Okay, and when I save this, and when I run the program, or when I run this on the screen, I will refresh this once again. You see hello on one line and word on other line, and word is in bold letters, right? So the PHP supports HTML tag also, right? So this is how you can write your first program or first hello world program in PHP. In the later videos, I'm also going to show you how to code this PHP in details. ठीक है, फिर हमने आज देखा जो फर्स्ट प्रोग्राम है वो किस तरह से एग्जीक्यूट करना है।
XAMPP इंस्टॉल कर लिया हम लोगों ने। नोटपैड प्लस प्लस में कैसे करना था ये भी हमने देखा। फर्स्ट प्रोग्राम कैसे लिखा जाएगा, कैसे एग्जीक्यूट करना है। HTML टैग्स को सपोर्ट करता है, सारे के सारे HTML पढ़ा होगा आप लोगों ने। HTML XML सारे के सारे टैग्स आप लोगों को याद होंगे, वो सब उन सबको सपोर्ट करता है। ठीक है, क्रॉस प्लेटफॉर्म के लिए होता है तो उनको भी सपोर्ट करता है आपको। तो ये चीज़ ध्यान रखने वाली है। अब नेक्स्ट टाइम आप लोग जब करेंगे, वैसे टाइम ओवर होने वाला है, कोई बच्चे कुछ पूछना चाहता है तो टेक्स्ट बॉक्स में मैसेज डाल दीजिए। टाइम ओवर हो जाएगा तो एंड करना पड़ेगा क्लास को इसको। देन आप लोग कोशिश कीजिए बच्चे, जो ये प्रोग्राम मैंने बताया है XAMPP वाला भी और ये सब है ना, आप ये इंस्टॉल कर लीजिए और प्रोग्राम करके देखिए। कोई परेशानी होती है देन बताइएगा, है ना, तो रेक्टिफाई करने की कोशिश करेंगे। कोई प्रॉब्लम हो तो बच्चे बता दीजिए, थोड़ी देर में इसको एंड करते हैं। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन ये है कि जो कमेंट्स है उसका क्या रोल होता है। कमेंट्स कभी भी प्रोग्रामिंग सेक्शन के लिए नहीं होती है, वो सिर्फ और सिर्फ यूजर को समझाने के लिए होती है। जो प्रोग्रामर होता है वो सिर्फ क्या करेगा, उसमें अगर बहुत सारे मॉड्यूल है किसी सॉफ्टवेयर के अंदर, तो अलग अलग मॉड्यूल को आइडेंटिफाई करने के लिए उसकी कोडिंग कहाँ से कहाँ तक है वो कमेंट सेक्शन को यूज करता है। कमेंट्स तीन तरह से इन्होंने बताया था हमें। एक तो डबल स्लैश वाला, वो होता है सिंगल लाइन के लिए। एक सिंगल स्लैश और स्टार, दैट इज फॉर मल्टी लाइन। 15 लाइन के लिए चाहिए मुझे, 8-10 लाइनों में लिखना है सर, तो एक स्टार स्लैश और स्टार लगा देंगे और जहां वो लाइनें खत्म होंगी वहां लास्ट में लगा। और हैश वाला भी जो शेल स्क्रिप्टिंग में यूज करते हैं वो भी सिंगल लाइन की यूज किया है। ठीक है, तो कमेंट्स का कभी भी कोई यूज प्रोग्रामिंग में नहीं होता है, कितना ही लिखिए आप उसके अंदर, डॉक्यूमेंट सेक्शन के लिए और समझने के लिए होता है। जो BR होता है हमारा, आप लोगों ने HTML के अंदर पढ़ा होगा, वो एक तरह से क्या होता है, हॉरिजॉन्टल टैब होता है, ब्रेक होता है नेक्स्ट लाइन के लिए, उसको ऐड करने की नीड नहीं होती, वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन में जाता है। बोल्ड को हमने इसलिए लिमिट में लगाया था कि कहां से कहां तक हमें बोल्ड करना है, अदरवाइज अगर उसमें भी नहीं लगाएंगे तो आगे के सारे टैब्स को सबको बोल्ड कर देगा। चलिए ठीक है बच्चे, कोई क्वेश्चंस नहीं है, थैंक यू, एंड कर रहा हूँ क्लास को।